Assalamu alaikum. Welcome back to Human-Computer Interaction. The title of today's lecture is Interaction Paradigms. First of all, we will take a look at what we studied in the last lecture. Last lecture में हमने interaction से मुतल्लिक different चीज़ें discuss की थी. First of all, we discussed the various interaction models. Interaction models कौन-कौन से हैं और frameworks कौन-कौन सी हैं. तो इसमें हमने दो models discuss किए थे. One was the Norman's model of interaction and the second was about and Beal revised version of Norman's model. तो ये हमने दो frameworks देखे थे. We then moved on to discuss the ergonomics of computer-based systems और उसमें हमने physical aspects of interfaces को discuss किया था. What are the physical aspects of interfaces which affect the comfort, satisfaction and performance of users? We then also compared the interfaces based upon context of work. तो interfaces आपके office में भी हो सकते हैं और एक industrial domain में भी हो सकते हैं. So we compared both of these kind of interfaces कि उनके दरमियान difference क्या है and how the ergonomics are affected. Subsequently, we moved on to the common interaction styles. कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए interaction styles कौन-कौन से हैं. तो इसमें we looked at command line based interfaces, menu interfaces, natural language interfaces, question answer and query dialog interfaces, form fills and spreadsheet interfaces. In today's lecture, we will be concerned with two things. First of all, we will discuss the WIMP interface, the WIMP style of interaction, और इसको हम थोड़ा सा detail से देखेंगे. And secondly, we will discuss the various interaction paradigms. Paradigms क्या होते हैं? First of all, उसको define करेंगे, and then interaction paradigms. So first of all, let's look at WIMP interfaces. Now, WIMP interfaces consist of four components primarily: windows, icons, menus, and pointers. This kind of style of interaction is the most common type of interaction today. तो आजकल आप जो computers इस्तेमाल करते हैं in your office and in your home, they predominantly use this mode of interaction. इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं. For example, apart from windows, icons, menus and pointers, we have buttons, toolbars, palettes, dialog boxes, and there are various other controls, various other components जो इस किस्म के इंटरफेस में इस्तेमाल होते हैं, and collectively they are known as widgets. तो इनको हम widgets कहते हैं. Now, first of all, let's look at windows. अब windows क्या होते हैं? Now, with the advent of computing, as computers became graphically based, और आपके computers जो हैं उस पे आप सिर्फ एक task नहीं बल्कि कई task कर सकते थे. So this is known as multitasking. So in multitasking, the user is performing many tasks at the same time. Now, one of the problems that arose was how to segregate these different modes of interaction, these different tasks, this different kind of dialogue. तो अब user वो कई tasks perform कर रहा है, कई dialogues perform कर रहा है, इसको segregate करने के लिए क्या किया जाए? So one method was the window. तो window basically एक screen पे आपका एक हिस्सा होता है, एक area होता है, जिसमें आप खास एक task perform कर रहे होते हैं. So, windows are areas of the screen that behave as if they were independent. So, different windows can be independent of one another. Windows में क्या हो सकता है? They can contain text or graphics. Windows को आप move भी कर सकते हैं, resize भी कर सकते हैं. And because you have multiple windows, so they can overlap each other. तो वे एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं. And they can be laid out next to one another.
यानी वो टाइल्ड भी हो सकती हैं, यानी विंडोज़ वो एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं और वो एक दूसरे के साथ भी हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं a tiled appearance. Now, windows usually have different controls inside them. For example, windows में scroll bars होते हैं. Now, these are controls which allow you to see information inside the window. तो एक window है, उसमें information जो है वो window के size से ज़्यादा है. So you can have vertical and horizontal scroll bars. इसके अलावा Windows have title bars. तो हर window में title bar होता है which tells you what this window is about. उसका title होता है. Another element in the WIMP style of interface are icons. Now icons are a very crucial part in this mode of interaction. तो icons क्या हैं? These are small graphics. ये छोटे छोटे graphics होते हैं which represent some kind of program or some kind of functionality. So in today's modern day GUI based systems, these can be found everywhere. So icons are small pictures or images and they represent some object in the interface. एक window भी हो सकता है, कोई action भी हो सकता है, any program, any application. Now icons can be various kinds. मसलन अब आपके सामने जो screenshot है, this is a screenshot of the desktop. अब desktop पे आपको different pictures और different graphics नज़र आ रहे हैं. So these are all icons. अगर आप कोई application खोलें, for example, Microsoft Word और Microsoft PowerPoint, तो उसके ऊपर भी icons आपको नज़र आएंगे. अगर आपने Microsoft PowerPoint या Microsoft Word खोलना हो, तो you might click on an option called New Document. That is also an icon, जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं. इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर different icons हो सकते हैं. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ड्राइंग करने के लिए कुछ icons हैं. फिर आप टेबल बना सकते हैं, एक ग्राफिकल आइकॉन है जिससे आप ग्राफ बना सकते हैं. Another part of the WIMP style of interaction are pointers. So ये जो आप icons पे क्लिक करते हैं, तो उसको क्लिक करने के लिए आप pointers इस्तेमाल कर सकते हैं. So WIMP style relies on pointing and selecting. Point भी कर सकते हैं और select भी कर सकते हैं. और normally इसके लिए आप कोई mouse इस्तेमाल करेंगे या track pad इस्तेमाल करेंगे या track point इस्तेमाल करेंगे और even a joystick, or you can even use your cursor keys or keyboard shortcut keys. So this is usually represented by a variety of graphical images. तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने pointers की different सूरतें हैं. Different types of pointers having different shapes. One thing about pointers is that they can change shape. For example, अगर आपने कभी वेबसाइट इस्तेमाल किया हो, तो उसमें जब आप एक ख़ास जगह पर पॉइंटर को लेके जाएं, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. मसलन इफ़ यू मूव ओवर अ हाइपरलिंक, तो पॉइंटर नहीं रहेगा, वो कर्सर नहीं रहेगा, बल्कि अब वो हाथ की तस्वीर वहाँ पे बन जाएगी. सो पॉइंटर्स कैन ऑल्सो चेंज शेप डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट यू आर पॉइंटिंग एट. अब हम आते हैं मेन्यूज़ की तरफ. Now menus are a style of interaction, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया. Now this kind of style of interaction is also part of the WIMP style of interaction. यानी हम कह सकते हैं कि ये एक सबसेट है in the WIMP style of interaction. So इसमें different options आपको पेश किए जाते हैं and you can select an option either using a keyboard shortcut or shortcut keys or by using a pointer. So menus represent a choice of operations or services offered on the screen. और उसमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. मसलन आपके सामने एक एग्जांपल है menus की. Now the top part of the screen below the title bar is known as the menu bar. ये जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है जिसपे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट एक्सेट्रा लिखा हुआ है, this is the menu bar. और उसके नीचे, फाइल के नीचे फॉर एग्जांपल,
यहाँ पे different menu options दिखाई दे रहे हैं. So the advantage of menus is that you can have many options which are then grouped together, और usually आप इसको logically group करते हैं. And these options are then hidden away for future use. तो बजाय से कि आप जो सारे options एकदम से present कर दें user को, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो user will be overwhelmed, वो परेशान हो जाएगा. तो आप इस तरह logically group करके उनको एक खास जगहों पे रख सकते हैं और फिर यूज़र को जो ऑप्शन चाहिए वो फिर उसको बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस enhances the usability of an application. अब menus की भी different types हैं. There are different kinds of menus. Now for example, we can have menu bars at the top of the screen and contextual menus which appear wherever you are. Now the menu bars at the top of the screen are the most normal kind of presentation or representation of menus. तो अब आइए देखते हैं इसकी different examples. So menu bars which are at the top of the screen, इसकी एक example है the pull down menu. आपके सामने एक screenshot है जिसमें pull down menu है. So in this kind of menu, आप mouse को किसी option पे लेके जाते हैं and then you drag the menu or you click on the menu. और इसके ज़रिए से options आपके सामने आ जाते हैं. Then the second type is the drop down menu. तो आप एक किसी फॉर्म के ऊपर हैं या किसी डायलॉग विंडो के अंदर हैं और वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जैसा कि आपको हाईलाइट किया गया है इस स्क्रीनशॉट में. तो आप इस पर क्लिक करते हैं जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं और आपको डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस नज़र आते हैं. Thirdly, we have fall down menus. तो इसमें यह होता है कि आप माउस को मेन्यू बार के ऊपर लेके जाते हैं एंड जस्ट बाय मूविंग द माउस ओवर तो मेन्यू ऑप्शंस वो आपके सामने खुल जाते हैं. Now we also have pop-up menus. So usually ये जो menus हैं they are an example of contextual menus. इसमें यह होता है कि आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं और आप किसी खास एलिमेंट पर क्लिक करते हैं. किसी खास इंटरफेस एलिमेंट पर क्लिक करके राइट क्लिक करके यूजुअली तो फिर आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे नीचे एक टास्क बार आपको नज़र आएगा. नाउ इफ़ यू टेक योर माउस एंड मूव द कर्सर ओवर द टास्क बार और राइट क्लिक करें तो आपको एक पॉपअप मेन्यू नज़र आ जाएगा. नाउ द मेन्यू ऑप्शंस represented here will be relevant to the taskbar. So this is a pop-up menu, a contextualized pop-up menu. फिर कुछ menus ऐसे भी होते हैं कि जो कि पाई शेप में हो. For example, आपके सामने एक screenshot है. Now in this screenshot, all the menu options are at an equal distance from the center. और अक्सर ये जो इस तरह के menus हैं वो multimedia applications और games के अंदर पाए जाते हैं. And often these menu options can rotate within the perimeter. So is that all the type of menus that are in existence? या कुछ और भी हैं? Well, there are slight variations on the type of menus that we have seen. For example, we can have cascading menus. अब ये क्या है? They are related to fall down menus or pull down menus. तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमने एक एप्लीकेशन खोली. For example, Microsoft PowerPoint. You click on any option. For example, tools. अब यहाँ पे आप जाते हैं macro के ऊपर. Now just by moving the cursor over macro तो एक और मेन्यू खुल जाता है और हो सकता है कि उस मेन्यू विंडो के अंदर उसके ज़रिए से एक और मेन्यू खुल जाए. So these are examples of cascading menus. तो इसमें एक hierarchical structure होता है menus का and you can have a cascading type of opening. इसके अलावा keyboard accelerators भी होते हैं जिसके ज़रिए से आप different menu options को select कर सकते हैं. So this has the same effect as using a pointer. मसलन by pressing the Alt key and the T key we can access the tool menu.
जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो ये आप पॉइंटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स यानी शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो बोथ मेथड्स ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। अब मेन्यू डिज़ाइन करना ये भी एक बहुत क्रूशल टास्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड बिफोर, मेन्यू ऑप्शंस शुड ऑलवेज बी लॉजिकली ग्रुप्ड। इनकी जो ग्रुपिंग है वो लॉजिकल होनी चाहिए और इंट्यूटिव होनी चाहिए। फिर एक और अहम बात कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन आप दें यानी हर मेन्यू को, और ख़ास तौर पे जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है ऑन द मेन्यू बार, नाउ दीज डिस्क्रिप्शंस शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी रेलिवेंट, और वो ऐसे हों कि यूज़र उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। सो ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स एंड द वर्ड्स which describe these menu options. फिर हमारे पास buttons होते हैं. Now buttons are individual and isolated regions within the display, जिसको आप select कर सकते हैं, and because of the selection you can invoke an action. For example, आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे के हिस्से में दो elements दिखाई दे रहे हैं, OK and cancel. These are buttons. But you also have special types of buttons. For example, radio buttons, which are used for a set of mutually exclusive options, and checkboxes, which are used for a set of non-exclusive options. तो जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट पे नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है which is highlighted, these illustrate radio buttons. And on this screenshot, you can see an example of check boxes. Now we talk about another element, which are toolbars. Now all these different icons, जिसके ज़रिए से आप different options select कर सकते हैं, these can also be found on the toolbar. So as the name suggests, ये एक बार है जिस पे different icons हैं which can help you to do something. तो वो एक किस्म के tools हैं. So इसको हम toolbars कहते हैं. So it's a long line of icons. तो इसके ज़रिए से we can have fast access to common actions. और चूंकि इस पे icons के साथ हम represent करते हैं, तो फिर इसको recognize करना वो easy हो जाता है. अब ये जो toolbars हैं, इसको आप customize भी कर सकते हैं. So whatever you're seeing in a common application, the icons in a toolbar, you can customize it. इसको आप change भी कर सकते हैं. You can choose which toolbars to see, and on an individual toolbar, you can change the options. अब कस्टमाइज आप कैसे करते हैं, इसी एग्जाम्पल आपको सामने है. इफ़ यू क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और टूल बार्स में जाएं, तो अब आपके सामने एक मेन्यू खुल जाता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं. नाउ दीज डिफरेंट ऑप्शंस represent different toolbars which you can select and deselect. Then within a particular toolbar you can also select the different icons. मसलन फाइल, अब ये एक ऑप्शन है, अब इस पे डिफरेंट कमांड्स क्या होनी चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर टूलबार्स बाय यूजिंग अनदर ऑप्शन, जिसमें आप चेक बॉक्सेस के जरिए से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट इन द WIMP स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन. इनको हम पैलेस कहते हैं, और टेयर डाउन टेयर ऑफ मेन्यूज. अब ये छोटे छोटे आइसोलेटेड विंडोज होते हैं इन विच यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस, जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. इसका फ़ायदा क्या है कि पैलेस के ज़रिए से आप एक विंडो जहाँ भी आप चाहें उसको रख सकते हैं. सो यू हैव लिटिल विंडोज ऑफ एक्शन, और इसकी एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रही है. इसमें डिफरेंट पैलेस आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट विंडोज ऑफ एक्शन जिसके अंदर आइकॉन्स हैं. यू कैन ऑल्सो क्रिएट पैलेस बाय मूविंग अ टूल बार. तो अगर आप एक टूल बार है उसको आप सेलेक्ट करें, उसको ड्रैग करें, तो देन दैट ऑल्सो बिकम्स एन आइसोलेटेड विंडो. तो इस तरीके से भी आप पैलेस को क्रिएट कर सकते हैं. सो पैलेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ओरिजिनली, और ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा से इंडिपेंडेंट हो, बल्कि आप उसको टूल बार से भी आप उसको लेके आ सकते हैं. नाउ वी कम ऑन टू डायलॉग बॉक्सेस. Now, dialog boxes क्या हैं? These are information windows that pop up to inform of an important event or request information.
क्योंकि अक्सर जब यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करता है, यानी वो बातचीत कर रहा होता है, यानी डायलॉग कर रहा होता है, तो उसमें यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है और सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होती है, तो उसके लिए हम ये डायलॉग बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं. तो आपके सामने एक एग्जांपल है which is an example of a dialog box. So with the help of these different controls, widgets, you can actually have a very easy manner of interaction with computers. And this is known as the WIMP style of interaction, which is the most popular and most common form of interaction. So those were interaction styles. Now let's talk about interaction paradigms. What are interaction paradigms? Usse pehle, we have to understand what paradigms are. Now, paradigms are a way of thinking. वो सोचने का एक अंदाज है, वो काम करने का एक अंदाज है. It's a kind of a philosophy. So, in the past, there have been different paradigms, यानी different theoretical frameworks. अगर हम physics की example लें, so there have been different paradigms in physics. We have the Aristotelian paradigm, we have the Newtonian paradigm, and we have the Einsteinian paradigm in physics. These were all paradigms, in other words, different ways of thinking about physics. Now, in human-computer interaction, we are concerned with interaction paradigms. यानी interaction करने के क्या तरीके हैं, philosophies क्या हैं, different methods क्या हो सकते हैं. And we need to understand these because by understanding the interaction paradigms, we can build better interactive systems. यानी जिसकी usability बेहतर होगी, which will fulfill the goals of the user. Now, understanding the paradigms, the interaction paradigms, is largely looking at the history of human-computer interaction. यानी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें कुछ पैराडाइम शिफ्ट्स नजर आएंगे. पैराडाइम्स का फ़ायदा क्या है कि हमें सोचने का एक नया अंदाज देता है. एंड यूजुअली दिस हैपन्स व्हेन न्यू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज अराइव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट इंटरेक्शन पैराडाइम्स. इनिशियली वी हैड बैच प्रोसेसिंग. सो कंप्यूटिंग वाज डन इन बैचेस using punch cards, and this was very difficult. Then we had time sharing. So, more than one person was using a computer. Then we had networking, where different users are connected to each other, where they perform various tasks. Then graphical displays, which made us to enable better interactions and gave us better user experiences. And this was facilitated by direct manipulation. Then came personal computing with the advent of microprocessors, and then global information access with the advent of the World Wide Web. And then new paradigms which are still emerging, like ubiquitous computing, a symbiosis of physical and electronic worlds. So, ये जो आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, this shows user productivity on a timeline and the various interaction styles that have been used. Now let's come on to the time sharing paradigm. Initially, computing was done in the form of batch processing. Punch cards होते थे, उसको आप कंप्यूटर में डालते थे. This was not a very efficient way of computing. Then with the advent of different technologies, computing power increased. And one person proposed a new paradigm. This is known as the time-sharing paradigm, proposed by Leclider. He saw the need to channel the new power that is emerging from technological advancements. So he proposed the idea of having single computers that can support multiple users. Another paradigm which came after this
was visual display units. Now, in this paradigm, information was not command line based, लेकिन वो graphical हो गई थी. Now, this paradigm was initiated by a person called Sutherland. Sutherland was a researcher at Stanford University, and he has various contributions in the field of computing. और उसमें से एक ये है कि he created a sketchpad as part of his PhD thesis at MIT. अब ये sketchpad क्या था? This was basically a machine that had graphical representations. यानी graphically आप objects को, visually आप objects को manipulate कर सकते थे. Icons का इस्तेमाल, copying का इस्तेमाल, objects का इस्तेमाल, visualizing and manipulating data. All these very, very innovative ideas were proposed in the Sketchpad system. Another paradigm shift were programming toolkits. Now, this was proposed by another researcher, and his name was Douglas Engelbart. He has many contributions. For example, he was the inventor of the mouse, a graduate of Berkeley. Now, he proposed the idea of augmenting man's intellect. And he said that one of the ways of doing this is by having the right programming toolkit. So basically, you have a toolkit in which you have these components which can perform a specific functionality, and you use these components to make up larger components. So programming toolkits enabled people to do things that they had not been able to do before. It also made the task of interacting with computers much, much easier. Then came the era of personal computing. Now, personal computing is still very, very common and popular today. जब हम, मैं और आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, so this is personal computing. Now, who was responsible behind the innovations that led to this paradigm? One of the persons behind this was Alan Kay. Now, Alan Kay was part of a research group at Palo Alto. So Xerox PARC, the Xerox Palo Alto Research Center, has given birth to many innovations, and many people have worked there who have created some very novel things. Now, Alan Kay, he proposed कि एक ऐसा system होना चाहिए which is powerful but small and can be used by an individual in an easy manner. तो इनका ख्याल था कि एक notebook type की चीज़, एक किताब की शक्ल की चीज़, उसकी साइज़ की चीज़ कि एक कंप्यूटर बनाया जाए. तो उन्होंने ऐसे ही किया, and he called this invention the Dynabook. So this was a very, very crucial development in personal computing. और आजकल जो हम लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, they are actually traced to this invention. And in fact, many things in his creation, in his invention, are not even available in today's computers. So in this paradigm, there were many, many inventions which made it easier to use computer-based systems. इसमें से एक चीज़ वो Windows system and the WIMP interface भी है. By using the WIMP interface, by using Windows, then we can more easily use computers. So again, this was another paradigm shift. Again, Windows जो है, who is responsible for this? The same group at PARC, at Xerox PARC. They developed a system called Alto. और बाद में उन्होंने एक और system बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा the Star. Now, this system, both these systems, they made an interface which was graphical in nature and which was easy to use and which incorporated all the elements of today's WIMP interfaces, meaning windows, pointers, icons, and menus. So this invention, the Alto and the Star, are the precursor to today's modern-day WIMP interfaces. In fact, the Xerox Star is the first commercial windowing system. One of the things that made these kind of interfaces very, very popular
were metaphors. So आजकल जो हम computers इस्तेमाल करते हैं, these use the desktop metaphor. इसमें आप करते ये हैं कि आप real world से कोई एक concept को लेते हैं and you use that concept to perform different tasks inside the computer. तो वो जो metaphors हैं, they represent some idea, some concept. So WIMP interfaces have been made popular with the help of metaphors. So metaphors क्या हैं? Relating computing to real world activity. This enhances the learning process and enhances the usability of applications. Now, when these kind of interfaces became popular, like the WIMP style of interface, and personal computing का era शुरू हो गया, some people try to explain this phenomena. Why is it so popular? Now, one such person is Schneiderman. In 1982, he describes the appeal of graphically based interaction. And then he coined a term which represents the appeal of such interfaces. और उसका नाम उन्होंने direct manipulation रखा. So, direct manipulation, basically, this talks about certain factors which help us to interact with graphical based systems. मसलन इसमें visibility of objects होती है, there is incremental action and rapid feedback. आपको फौरी तौर पे feedback मिलती है जो भी आपने action ली है. Reversibility encourages exploration, तो आप अपने actions को reverse भी कर सकते हैं. Syntactic correctness of all actions, syntactically ये correct होते हैं. And replacing language with action. इसकी सबसे अच्छी example वो Apple Macintosh है. Now, the Star was not commercially successful. What Apple did, they took these ideas and improved it, enhanced it, and they marketed the Apple Macintosh. Another type of interaction paradigm is hypertext. Now, what is hypertext and how has this actually come into being? Well, in 1945, a person by the name of Vannevar Bush, उन्होंने कहा that publication has been extended far beyond our present ability to make real use of the record. Now, Bush was in fact in charge of many research scientists, about 6,000 at that time in 1945, और उन्होंने देखा कि information share नहीं हम कर पा रहे, so we're not able to benefit from the information. So he said there should be some mechanism to share this information. ये जो mechanism उन्होंने propose किया, तो इसके लिए उन्होंने एक device propose की जिसका नाम Memex रखा. In this, all records will be stored, all articles and all communications will be stored. इसमें information retrieval होगी by indexing, keywords and cross references. और इसके लिए जो mechanism उन्होंने propose किया, physically वो computer नहीं था, बल्कि microfilm थी. Anyway, these ideas can then be seen as the foundation of modern day hypertext systems. Hypertext systems में क्या होता है कि you link different pieces of information together. और इसमें जो linking होती है वो linear नहीं होती. So because people learn or want to learn in a non-linear fashion, so this kind of paradigm supports non-linear learning. So you can have an item, an information item, connected to many other pieces of information. So hypertext, which was proposed by Ted Nelson, which later became the basis for the World Wide Web. So this is a non-linear browsing structure and key to managing the explosion of information. Another type of paradigm is multimodality. Now, what is a mode or modality? This represents a human communication channel. तो ये channels क्या क्या होते हैं? तो ये आपकी sound होती है, ये आपकी vision होती है. So having systems which use all these different modes, this is multimodality. Now in today's modern day computers, we have these modes. लेकिन the true multimodality paradigm dictates that we should have these more and they should be used at the same time.
So the emphasis is on simultaneous use of multiple channels for input and output. Now, in modern day computing, interaction is not based on a single user's interaction. बल्कि आजकल जो interaction होती है that involves multiple users within a certain context. So we have another paradigm called computer-supported cooperative work. Computer-supported cooperative work, or CSCW. So this takes into it these social aspects when multiple users, they interact with one another. अब इसकी एक example email है where different people interact with one another. वो एक काम करते हैं, cooperate करके एक काम करने की कोशिश करते हैं. So computer-supported cooperative work. Another interaction paradigm is the World Wide Web. Now the World Wide Web is based upon the hypertext paradigm. Now hypertext was originally conceived as a closed system. Tim Berners-Lee, who proposed the World Wide Web, he envisioned this as a global system. So by using some universal protocols and markup languages, so protocols like HTTP, markup languages like HTML, you could make publishing easy and easily accessible. And this led to the explosion of information and global publishing and access of information. Another type of interaction paradigm are agent-based interfaces. Now, if you want to interact with computers, उसका एक तरीका यह है कि हम command line based interfaces इस्तेमाल करें या direct manipulation इस्तेमाल करें. One method is by having an agent. जैसे कि real life में अगर आपने कोई काम करना हो तो very frequently you employ the services of an agent. For example, estate agents to buy land or houses. In the same way, on computers you can have agents, which are basically software applications, which can do work for you. तो उनको आप basically command दे देते हैं, instructions दे देते हैं, using different forms and techniques, and then the agent goes away and does the work for you. One example of this is web crawlers. So search engines do indexing using web crawlers. This is a form of agent systems. Now coming to new interaction paradigms, यानी वो interaction paradigms जो अभी emerge हो रही हैं और जो अभी common और popular नहीं हैं. Let's take a look at what these are. We have ubiquitous computing, pervasive computing, wearable computing, tangible bits, augmented reality, attentive environments, and many, many more. First of all, ubiquitous computing. Now, this interaction paradigm was proposed by a person called Mark Weiser, again, a person who worked at Xerox PARC. Now, his proposal was that computers, they should become invisible. He once said, the most profound technologies are those that disappear. So in the 80s, computers were very visible. But he proposed कि अब जो ज़माना आने वाला है, if you want to enhance the user experience and if you want to make the interaction more easy, then we have to make these computers less and less visible. So he proposed that you have different types of computers, the yard computer, the foot computer and the inch size computer. इन different sizes के computers हों. और अगर आप history को देखें ज़रा, तो आप देखेंगे कि size of computers वो अब छोटे होते जा रहे हैं. So now you have devices which can fit in your pocket, and they are in fact a computer. So the dream and the vision of ubiquitous computing is slowly becoming realized. Coming on to another type of paradigm is sensor-based and context-aware interaction. Now, humans are good at recognizing the context of a situation and reacting appropriately. तो एक काम ये है कि हम computer-based systems को ये चीज़ सिखानी शुरू कर दें, that they become aware of a context. They can also become aware of physical phenomena. So, अगर senses को देखें, हम बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को sense कर सकते हैं. Light, sound. So having computers that are actually aware.
So sensor-based computers. There is now talk of having computers which can actually sense you. वो आपको पहचान सकते हैं. For example, by scanning your iris. Sensors के ज़रिए से आपके iris को स्कैन कर लिया जाए and then learn about you. And by scanning you and matching that with a profile and also being aware of the context in which you are working or doing an activity, the computer can have different methods, different new ways of interaction. Another type are wearable computers. So this is a new interaction paradigm जिसमें कंप्यूटर आपके सामने नहीं है बल्कि कंप्यूटर आपके ऊपर है. You are wearing the computer. Nowadays, many companies are introducing products which have computers integrated into the fabric of clothing. Again, a very new and novel idea. And lastly, we have augmented reality and physical virtual integration. Another proposed paradigm is that you integrate the virtual and the physical. So, you could have a book which has physical elements but also virtual elements. So, by combining digital information with physical objects, एक और example इसकी ये है कि एक greeting card आपका हो सकता है with digital animation. A greeting card made of cardboard, लेकिन उसके अंदर animation जो है वो digital है, with a customized message for the person you want to give the card to. So these are new and emerging interaction paradigms. So that brings us to the end of today's lecture. In today's lecture, we have studied WIMP style of interfaces, WIMP interaction, and looked at different interaction paradigms. उसमें हमने वो paradigms भी consider किए हैं जो कि पहले थे और अब मौजूद हैं, और इसके अलावा हमने नए paradigms भी देखे हैं जो कि अभी common नहीं हुए, जो अभी popular नहीं हुए. So this was all about interaction and interaction paradigms. So that's all for today. Until next week, Allah Hafiz.